Good morning, everyone. First of all, class start करिवा आगरू जदि ऑडियो एंड स्क्रीन रे शो होथिबा पीपीटी clearly show होची then let me know in the live chat. लाइव चैट रे मते कंफर्म करके कहंतु कि मु जहा कहूची मो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर अछि कि नाही. ठीक अछि. समस्ते कहउचंदे क्लियर अछि बोली. तो आज हमें टेस्ट नंबर 2 मॉक टेस्ट नंबर 2 रो कांसेप्ट एंड आंसर डिटेल्स रे डिस्कस करिवा. ओके एंड आई वुड एडवाइस कि समस्ते गोटे पेन एंड नोटबुक नहीं कि बसिबे. जहाँ भी कॉन्सेप्ट की किछि पॉइंट जदि तांकर नोट्स रे इनक्लूड नथिबो से माने इधर एक्सप्लेनेशन रु ताकू कवर अप करि परिबे नहले एम्ति रनिंग नोट्स भी बनै परिबे. ठीक अछि. एंड पर क्वेश्चन आई विल गिव यू अ फ्यू सेकंड्स. 5 सेकंड्स हे पारे क्वेश्चन र डिफिकल्टी लेवल को नहीं कि बट 10 सेकंड्स हे पारे कि असर्शन रीजन थिले मे बी 15 सेकंड्स र टाइम भी मु देई पारे. ट्राई टू आंसर each and every question in the live chat. Answer wrong हो पछे try to attempt the question. Then आमे तो एठी discuss करू जेही तार explanation. Okay. Per question I'll give you a certain amount of time to read and answer the particular question. आज सेमती किछि एते भी फैक्ट conceptual question नाही but 360 degree मु each concept को कवर करबा को ट्राई करिवि. फर्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एंड यस जो भी क्वेश्चन प्योर फैक्ट बेस्ड थिबो फैक्ट बेस्ड आमे ताकू जस्ट आंसर जानि की मूव ऑन करिबा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. ठीक अछि. फर्स्ट क्वेश्चन रो स्टार्ट करिबा. 50 टा क्वेश्चन रहिबा आजिर सेशन रे. टोटल 50 MCQs we will cover today. Which of the following correctly describes? Correctly कहिछि incorrect कहिनी काहे ना बहुत क्वेश्चन रे not correct incorrect एम्ति कहितै. So do read the question very carefully. Correctly describes the longitudinal extent of the Great Plains of North India. आ भितर को स्टेटमेंट टी करेक्टली लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया को डिस्क्राइब करूची. ऑप्शन नंबर ए अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब टू असम, about 2500 kilometer from Punjab to Assam, about 3000 kilometer from Rajasthan to Nagaland, about 2000 kilometer from Delhi to Arunachal Pradesh. I am giving you 10 seconds and the 10 seconds starts now. Answer टी हबो बी about 2500 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब टू असम. जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया रहिला ताको आमे आउ कोन कहिताउ
इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ओके आउ एटा कोठु को जाय स्ट्रेच हे थाए यार डायरेक्शन होची वेस्ट टू ईस्ट अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया आउ ये जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट रहिला ये जो प्लेन्स रो इट लाइज इन पंजाब नियर द बॉर्डर विथ पाकिस्तान आउ जो तार ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट रहिला इट इट रीचेस आसाम स्ट्रेच हे कि इट रीचेस द आसाम पर्टिकुलरली जो ब्रह्मपुत्र वैली रीजन रहिला सेठी तो ए जो एंटायर वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच रहिला इट इज अबाउट 2500 किलोमीटर इन लेंथ आउ जो लैटिट्यूडिनल जदि आम लंगिट्यूडिनल डिस्कस कले टिके लैटिट्यूडिनल देखिदबा लैटिट्यूडिनल नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट लैटिट्यूडिनल कोटा नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट इट इज अराउंड 150 टू 300 किलोमीटर वाइड करेक्ट varying across different regions आउ जो plains रहिला they are formed by three major river systems Indus Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries जो माने कि alluvium आनी के deposit करंती and millions of years over हैला पर ए plains form हेची तो एठु हमें prelims पई key facts कोन उठेले कि area ये total cover केते करूची plains around 7 lakh स्क्वायर किलोमीटर एवरेज ए प्लेन रो एलिवेशन केते रहउची 100 टू 200 मीटर अबव द सी लेवल ठीक अछि आ अंकर फॉर्मेशन केमती हेची फ्लूवियल डिपोजिशनल एक्टिविटी द्वारा एबे जस्ट मु डिस्कस करली नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Next question is the Bhabur region of the northern plains is characterized by first option fertile alluvium renewed annually by floods, coarse sediments where streams appear underground. Option number C high clay content leading to waterlogging. Option number D elevated old alluvium containing the conker nodules. Abhidru quota answer above 10 seconds doji 10 seconds starts now. Try to give the answer in the live chat. Okay, Namita Naik first कहले A नाई B हबो and I have explained it. Second number question को answer करो. Second answer about B. Coarse sediments where streams disappear underground. जो भाबर region हमर रहिला, it lies south of the Shivalik hills. एटा धर Shivalik hill हैला, it lies south of the Shivalik hills. को region? भाबर region. एटा कौन? Shivalik hills. Okay. आउ एठू जो रिवर्स आसंती कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स जेमती गंगा हैला यमुना घाघरा से माने कोन करंती रिवर्स से केवल वाटर त न थाए दे कैरी लार्ज कोर्स एलिमेंट्स विथ देम जेमती कि पेबल्स हे गला ग्रेवल बा सैंड जेते बळे ए सब रिवर ए फुट हिल्स दे रीच द फुट हिल्स से माने एठे डिपोजिट करंती से जो कोर्स लोड को जहा फल एटी गोटे नैरो बेल्ट फॉर्म हुए आ बेल्ट रो विड्थ होची 8 टू 16 किलोमीटर वाइड थाए ताकू कहा जाए भाबर आ जेहेतु सेडिमेंट्स रो साइज बहुत बड़ आ से माने कोर्स तो तांकर हाई परमिएबिलिटी पोरोसिटी एंड हाई परमिएबिलिटी ऑफ दिस सेडिमेंट्स तो जो स्ट्रीम ए बेल्ट थ्रू रु गति करे it disappears underground. Streams disappear underground here. आउ जो disappeared water रहिला से completely disappear तो हे जाएनी से पुनी disappearance परे से पुनी re-emerge करे गोटे particular belt बा गोटे particular region रे जाइकी आउ ताकू कुहा जाए हमर तेराई region making that area marsh and swampy. ठीक अछि
तो आंसर हम बी। मामिनी ठीक आंसर देइछंदी, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन, which of the following statements correctly differentiates the khadar from bhangar? First, khadar is older alluvium, bhangar is younger alluvium. Then कहला khadar is saline, bhangar is fertile. Then option number C कहिछि कि khadar is renewed every year by floods. Bhangar represents older alluvium. Then option number D कहला khadar is found along foothills, bhangar along the river channels. Correct answer कौन हबो? 10 seconds starts now. Option number C is the correct answer. Khadar is renewed every year by floods और bhangar represents the older alluvium. ଆମର जो northern plains ରହିଲା, northern plains से ଦି भागरे divide ହେଇଛି, divided into two types of alluvial deposits. First होची bhangar, जोटा कि हमें older alluvium भी कहिथाउ, and it is found where? It is found above the flood plains. Above the flood plains. ठीक अछि, and it contains calcareous concretions जहाँ को कंकर नोड्यूल्स भी कुहा जाए. Slightly एमाने टिके elevated and एमाने less fertile. किंतु खादर जोटा another type of alluvial deposit, खादर आकु newer alluvium कुहा जाए, new alluvium. Then एमाने जो they are found along the current river courses and floodplains. Fine silt plus clay and sand जो annually floods द्वारा deposit हुए, they are composed of that, and एमाने fertile थांती, fertile with fresh sediments. तो जेहेतु एमाने fertile थांती, they are preferred for the intensive agriculture. Answer कौन हबो? Answer हबो khadar is renewed every year by floods, bhangar represents the older alluvium. Question number 4. Which of the following river systems primarily contributes to the formation of the Punjab Plains? Punjab Plains रो formation पाई की को river system primarily contribute करचंदी? Ganga and Yamuna, Indus and its tributaries, Brahmaputra and its tributaries, Ghagra and Gandak. Answer कौन हबो? समस्ते क्वेश्चन नंबर 3 रो करेक्ट आंसर देइचंदी, वेरी गुड. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर करो लाइव चैट रे. आंसर इज इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो पंजाब प्लेन्स रहिला, दे फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 रे मे बी हमें डिस्कस करले ऊपर गोटे क्वेश्चन रे कि दे फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, एंड दे मेनली लाई इन द पंजाब आउ टिके माने ईस्टर्न पाकिस्तान आडू को भी एक्सटेंड हेचंदी, ईस्टर्न पाकिस्तान आडू को भी एक्सटेंड हेचंदी. आउ ये जो रीजन टा रहिला, इट इज फॉर्मड बाय इंडस रिवर and 5 major tributaries, and तांकर 5 major tributaries कौन कौन इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज? फर्स्ट होची झेलम, देन चेनाब, रवि, सतलज
and Bias. एगुड़ी हूँ 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम आउ वर्ड जो पंजाब टा रहिला इट लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स ओके एठी गोटे जिंस आउ गोटे जिंस एठी नोट करिवे दिस इज एक्स्ट्रा जो गंगा यमुना सिस्टम रहिला गंगा यमुना सिस्टम they form what they form the Ganga plains आउ जो ब्रह्मपुत्र सिस्टम रहिला they form the Assam or Brahmaputra plains and Punjab plains it is formed by the Indus and its tributaries okay answer कौन बा answer होगा B Indus and its tributaries question number 5 which part of the great plains of North India is the thickness of alluvium is the greatest नॉर्थ इंडिया जो ग्रेट प्लेन्स अच्छी तार को पार्ट रे आलुवियम रो थिकनेस सबठारु अधिका फर्स्ट पंजाब हरियाणा बिहार वेस्ट बेंगल एंड आसाम चारटा ऑप्शन देछि करेक्ट ऑप्शन एटी 10 सेकेंड्स रे कोटा हबा आंसर आंसर दियो समस्ते 4 रो करेक्ट आंसर देछंदी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई टू अटेम्प्ट रीड एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिकनेस ऑफ एलुवियम डिपोजिशन एटा फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म न थाए कोठी कम हेई थाई पारे तो कोठी अधिका हेई थाई पारे सो इट इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कौन पाई कि एटा वेस्ट टू ईस्ट इंक्रीज होची ड्यू टू ओल्ड जियोलॉजिकल साइकिल जियोलॉजिकल एज सॉरी ऑफ वेस्टर्न रिवर्स लाइक इंडस जेमती इंडस हे गला एंड जेते एक्टिव और यूथफुल डिपोजिशन हबो बाय द ईस्टर्न रिवर्स सेते इंक्रीज हबो बाय मोर एक्टिव and youthful depositional nature of eastern rivers like Ganga and Brahmaputra आउ जो टेक्टोनिक डिप्रेशन रहिला ईस्टर्न पार्ट रे से माने भी एक्ट करंती एज अ सेडिमेंट ट्रैप एई सब रीजन पाई कि सेडिमेंट रो थिकनेस एलुवियम रो थिकनेस बढ़े तो मैक्सिमम थिकनेस कोन हबो एलुवियम रो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एलुवियम अप टू 6000 मीटर और 6 किलोमीटर आमे देखिया को पाई थाउ इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम रीजन ओके वेस्ट बंगाल एंड आसाम रीजन रे इन कंट्रास्ट जो पंजाब और हरियाणा रीजन रहिला से मानकर बहुत थिनर एलुवियम थाए माने 1000 टू 2000 मीटर जाके तांकर थिकनेस ता थाए तो एलुवियम सबुठारु थिकेस्ट कोठी बेंगल बेसिन रे जो वेस्ट बंगाल एंड आसाम रीजन रहिला एठी अधिका थिनेस्ट कोठी पंजाब एंड हरियाणा रीजन रे रीजन कोन एक्टिव डिपोजिशन टेक्टोनिक डिप्रेशन इन द ईस्ट जस्ट अबे डिस्कस कली तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर Question number 6. Which of the following crops is most extensively cultivated in the Khadar tracts of the Ganga plain? आंको भितरु को crop सेटा extensively cultivate होजी in the Khadar tract of the Ganga plains? Cotton, wheat, millet and coffee. आंसर हम बी व्हीट जो खदर ट्रैक्ट्स रहिला
सेमानकर कोन थाए दे आर द न्यू alluvium flood plains just discuss कले of a कोट river गंगा and its tributary and सेमाने कोन थांदी highly fertile silt clay sand ए सब द्वारा कंपोज हेई थांदी annual floods द्वारा डिपोजिट हेई थांदी तो एमानकर कोन थाए they are moisture retentive and rich in potash and lime rich in potash and lime जोटा कि आउ से माने well drained भी थांती they are well drained आउ ए सबू तांको आइडियल करूची फॉर रबी क्रॉप्स स्पेशली व्हीट गोटे कौन रबी क्रॉप ठीक अच्छे आ बाकी जो क्रॉप्स रहा जमती कि सुगर केन है पल्सेस बा राइस से गुड़ी को भी ग्रो करा जाए किंतु व्हीट डोमिनेट करे ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन कहीं आंक पाखे फर्टाइल सॉइल भी अच्छी विथ गुड मॉइस्चर रिटेंशन गंगा प्लेन्स दे एक्सपीरियंस कूल विंटर्स जोड़ा कि रबी सीजन पाई कि बहुत ही आइडियल इरिगेशन भी कैरी आउट होची थ्रू कैनल्स एंड ग्राउंड वाटर भी अबंडेंट अच्छी एठी बाकी ऑप्शन हमें देखी दबा टिके कॉटन कोठी होची कॉटन दे प्रिफर मेनली ब्लैक सॉइल जाको रेगर भी कहा जाए रेगर इन आउ से माने कोठी अधिका देखा जांदी डेकन प्लेट्यू देन millets they grow better in semi arid regions जेमती कि राजस्थान बा एमपी ओके एंड कॉफी कोडी कॉफी होची गोटे ट्रॉपिकल क्रॉप आउ एटा कोडी ग्रो हुए कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु ऑन हिल स्लोप्स नॉट प्लेन्स बुझीला आंसर कौन बा आंसर हम बी क्वेश्चन हिसाब रे व्हीट Question number 7. The Terai region located south of the Bhabar belt is notable for high aridity saline soils, marshy land with dense forest and re-emerging streams. बहुत ही easy answer. आमे directly answer एटी ऊपर गोटे को question रे गोटे दिटा question आमे already discuss करी सारचे. Absence of groundwater, plateau like undulating terrain. Ten seconds over. Answer about marshy land with dense forest and re-emerging stream. जो फर्स्ट कहली कि शिवलिक रो फुट हिल्स रे फर्स्ट भाबर बेल्ट थाए देन आमर आसे तेराई बेल्ट तार साउथ टू भाबर भाबर रे जेतेबेले स्ट्रीम्स डिसअपियर होंती दे माने से माने फर्दर जाई के रीइमर्ज कोडी होंती तराई बेल्ट रे जाई के रीइमर्ज होंती एंड दे रन पैरेलल टू द शिवलिक फुट हिल्स भाबर जोन रे रिवर डिसअपियर होंती तराई रीजन रे रिवर पुनी रीइमर्ज होंती ओके आउ ए रीजन टी तेराई रीजन इट इज ह्यूमिड किछि कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करो ह्यूमिड एंड डेंसली फॉरेस्टेड densely forested and historically it is wildlife it is home to wildlife and eta besi gote malaria prone region भी earlier times रे देखा जाउतला and the terai soil it is rich and fertile आगुर भी discuss करचे rich and fertile good for agriculture okay answer कौन बा marshy land with dense forest and re-emerging streams. Question number 8. Consider the following statements regarding the physiographic divisions of the Great Plains of North India. First statement कहला the upper Ganga plain lies mainly in the Uttar Pradesh and parts of Haryana. Second statement कहछि the middle Ganga plain includes Bihar and eastern Uttar Pradesh. Third statement कहछि the lower Ganga plain extends through the West Bengal and the Sundarbans. How many of the above statement are correct? आ भितरु केटा correct अछि? Only one, only two, all three and none. 15 seconds दोची मु आको आंसर करिवा को
आंसर अब सी ऑल द थ्री आर करेक्ट गंगा प्लेन को तीनिटा भागरे डिवाइड करा जायछि डिवाइडेड इनटू थ्री फिजियोग्राफिक सब रीजन्स तांको जियोग्राफिकल और डिपोजिशनल फीचर को नेकी फर्स्ट होची अपर गंगा फर्स्ट होची अपर गंगा प्लेन और एटा कोठी लाई करे इट लाइज टू द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ हरियाणा तो ऑप्शन नंबर 1 हमर ठीक है गला आंकर गोटे जेंटल स्लोपिंग थाए फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जेंटल स्लोप थाए रिवर्स कौन कौन एठी इंक्लूड थांती गंगा यमुना एंड घाघरा and soil both khadar and bhangar khadar alluvium ଆଉ crops कौन कौन एठी ग्रो हुए wheat and sugarcane then amara asibo middle ganga plain it covers the eastern uttar pradesh and bihar एटा भी करेक्ट अछि एंड आंकर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन आंकर लो ग्रेडियंट थाए they are of low gradient and it is frequent flooding way आउ एठी को रिवर इंक्लूड थांती गंगा सॉरी गंडक घाघरा एंड कोसी एंड एमाने भी बहुत ही फर्टाइल थांती डेंसली पॉपुलेटेड थांती सपोर्ट्स राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन देन हमारा आसीबो लोअर गंगा प्लेन दे लाइज इन द वेस्ट बंगाल एक्सटेंडिंग अप टू द सुंदरबंस डेल्टा रिवर्स गंगार डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली एंड मेघना सिस्टम आंकर कौन कैरेक्टरिस्टिक्स थाए they are characterized by the deltaic formation they form deltas tidal influence and mangrove vegetation answer कौन हबो all the three are correct question number 9 assertion the great plains of north india are among the most densely populated regions in the world reason कहला the region has fertile alluvial soils and abundant water resources suitable for intensive agriculture read the four options and answer accordingly you have 15 seconds time answer अब A दीटा जाक ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेट प्लेन्स रहिला नॉर्थ इंडिया रो जहा को इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी हमें कहि थाउ दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ग्लोबली पॉपुलेशन डेंसिटी आरो सेमती देखिया को गले नियरली ग्रेटर देन 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन मेनी एरियाज रोची द रीजन एटा एठी क्लियरली एक्सप्लेन करूची कि कोन पई पॉपुलेशन अधिका काहे ना एठी फर्टाइल अलुवियल सॉइल्स अछि they are deposited by rivers like ganga yamuna brahmaputra आमे पूर्व क्वेश्चंस रे डिस्कस करचे जोडा कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स रोची तो एग्रीकल्चर पई एटा इंटेंसिव एग्रीकल्चर पई एटा गोटे आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूची अबंडेंट वाटर सप्लाई भी अछि काहे ना एठी बहुत इट इज द रीजन इज ड्रेन्ड बाय मेनी पेरिनियल रिवर्स throughout the year drainage provide होची canals अछि ground water availability अछि and तांकर flat topography अछि आ गोटे रीजन हला कि फ्लैट टोपोग्राफी जोटा कि ट्रांसपोर्ट पाई की इजी सेटलमेंट इरिगेशन मेकानाइज्ड फार्मिंग पाई की भी इजी एंड फेवरेबल क्लाइमेट भी प्रोवाइड करूची मॉडरेट रेनफॉल रहउची फेवरेबल क्लाइमेट ओके मॉडरेट रेनफॉल रहउची टेम्परेचर सपोर्ट भी मिलुची तो मल्टीपल क्रॉप्स एनुअली सेठी
हार्वेस्ट हो पारुछंती आंसर कौन हम बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. The Peninsular Plateau of India forms part of which ancient continental mass? This is purely factual question. Answer कौन हम Laurasia, Gondwana land, Angara land and Panthalassa. Peninsular Plateau India रो से आ भितर को एंशिएंट कॉन्टिनेंटल मास रो गोटे पार्ट फर्स्ट ऑप्शन कहला लोरेशिया देन सेकंड गोंडवाना लैंड थर्ड होची अंगारा लैंड देन फोर्थ पैंथलासा ओके तो आंसर हम बी गोंडवाना लैंड जो पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया रो सेटा होची oldest and most stable landmass of the Indian subcontinent. Au eta ancient Gondwana land ro gote part that existed during the Paleozoic era about 250 million years ago. Okay, Gondwana land au kono include करे? It includes India, Africa, Australia, then Antarctica and South America. Pore due to plate tectonic movements, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स लैंडमास टा भांगी गला आउ जो इंडियन प्लेट रहिला सी नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कला एंड देन से यूरेशियन प्लेट संगे कोलाइड हैला जेतबळे हिमालयास फॉर्म हैला ओके आ जो लोरेशिया को टिके देखिबा लोरेशिया होची एटा नॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट दिस इज नॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट जोटा कि इंक्लूड करे यूरोप एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका अंगारा लैंड कोन एटा अनदर टर्म फॉर द नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल मास अनदर टर्म फॉर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल मास जोटा कि लोरेशिया रो गोटे पार्ट पैंथलासा कोन एटा होची एंशिएंट ग्लोबल ओशियन को पैंथलासा कुआ जाय ग्लोबल ओशियन आकु कुआ जाय पैंथलासा इट इज नॉट अ लैंड मास. Question number 11. Which of the following correctly represents the general slope of the peninsular plateau? From east to west, from north to south, from west to east, then south to north. समस्त करेक्ट आंसर दोचंदी 10 रो बी हबो डिंपल मामिनी एंड श्रीधर वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर सी रा आंसर हबो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हमर रहिला तार स्लोप eastward gently move way, slopes gently eastwards, meaning western ghats seti higher slope 900 to 1600 meter around, then eastern ghats re lower slope around 600 meters. As a result जो बहुत गुड़े जो रिवर्स रहिले जेमती गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी से माने कौन करती जे जहा फल रे एटा ईस्टवर्ड जेंटल स्लोप हे जाउची तो दे फ्लो ईस्टवर्ड्स इनटू द बे ऑफ बेंगल. बुझीला मात्र केईटा रिवर्स अछंती जेमती नर्मदा एंड तापी दे फ्लो वेस्टवर्ड्स. ड्यू टू फॉल्टिंग और रिफ्ट वैली. आंसर कौन हम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट.
Question number 12. The Chotanagpur Plateau is primarily composed of which type of rocks? Factual question. 5 seconds to answer there. Sedimentary rock like limestone and shale, crystalline, igneous and metamorphic rocks, aeolian deposits of sandstone and laterite, marine limestones of Cretaceous age. कौन हमारा आंसर? Answer about crystalline, igneous and metamorphic rocks. Chotanagpur Plateau forms the northeastern parts of the Peninsular Plateau, and Archean rocks. It is made up of Archean rocks, जोड़ा कि oldest rock of earth. Okay. Question number 13. Which of the following pairs is correctly matched? Plateau ଦେଇଛି, then ତାଙ୍କର major mineral resource ଦେଇଛି. First କହିଲା Karnataka Plateau coal. Chotnagpur ଏଠି option is missing, but we will discuss it. Karnataka Plateau coal, Chotnagpur Plateau mica is correctly matched. No, sorry. Correctly matched आंको भितरु किए गोटिए ही हबो. Chotnagpur Plateau mica and Malwa Plateau gold, Telangana Plateau lignite. चारटा ऑप्शन देछि आ भितरु को ऑप्शन को पेयर टी करेक्टली मैच हेछि with its major mineral resource. Answer in 10 seconds. Chotnagpur Plateau mica eta correctly match heछि. बाकी Karnataka Plateau, Malwa and Telangana Plateau, these are the wrong options. Karnataka Plateau रा right option कोन हेतांदा? एटी कोन देखा जाए iron ore, then manganese, आउ कोन एटी मिले gold. जानथिबे समस्ते कोलार fields. Malwa Plateau रा आंसर कोन हबो? एटा ब्लैक सॉइल. एटी गोल्ड मिलेनी, ब्लैक सॉइल एटी अछि, तो एटी कॉटन कल्टीवेशन हुए, नॉट गोल्ड. ओके, देन तेलंगाना प्लेट्यू एटी कोल, लाइमस्टोन मिले, नॉट लिग्नाइट. Question number 14. Which of the following hill ranges act as the northern boundary of the Peninsular Plateau? Nilgiri Hills, Satpura Range, Aravali Range and Rajmahal Hills. कौन अब 14 number question रा answer? Factual question अच्छी. Answer is C. Aravali Range. Aravali Range एटा गोटे world रो oldest fold mountain, marks the northern boundary of the Peninsular Plateau. Question number 15. Which of the following rivers forms a rift valley between Satpura and Vindhya? ऊपर डिस्कस कर ले. Which of the following river? Just a second. Godavari, Narmada, Krishna and Mahanadi.
आंसर इज नर्मदा. नर्मदा रिवर से केमिति फ्लो करे? इट फ्लोज westward through a rift valley. Through a rift valley by created by faulting between the Vindhya and Satpura. Okay, a valley टा होची structural, এটা erosional नुह, and it opens into the Gulf of Khambat, Arabian Sea, forming an estuary. Correct. Tapi river भी ये flow करे एटी, it also flows in a similar smaller parallel rift valley to the south of Narmada. Question number 16. A step-like topography of the Deccan Plateau is primarily a result of erosional activity by rivers, differential folding of ancient rocks, successive lava flows of the Deccan Traps, marine regression during the Cretaceous period. Deccan Plateau रो जो step-like topography अछि, एटा it is primarily a result of which of the following options? A, B, C, D. Answer कौन हबो? आंसर हम सी, सक्सेसिव लावा फ्लोज ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स. जो डेक्कन प्लेट्यू रहिला एटा केमिति फॉर्म हेची? इट वाज फॉर्म्ड बाय मैसिव वोल्केनिक एरप्शंस. Massive volcanic eruptions. Okay, around 65 million years ago during the Cretaceous period. During the Cretaceous period. ଆଉ जो each eruption ଯେତେବେଳେ ହେଲା, it deposited layers of the basaltic lava. Deposited basaltic lava. Basaltic lava रा layers form हेगला. तो over time कौन हैला? Erosion expose हैला through these layers, so giving a step-like or terraced topography. Hence ताकू Trappian topography भी कुहा जाए. Trappian topography भी कुहा जाए. Question number 17. Which of the following regions exhibits a radial drainage pattern? Answer habo C. छोटनागपुर प्लेट्यू. एटा गोटे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो करे जो थरे की को रिवर्स इंक्लूडेड दामोदर, देन सुवर्णरेखा एंड कोएल, जोड़ा की आउटवर्ड रेडिएट हुंती. रेडियल ड्रेनेज कोन? व्हाट इज रेडियल ड्रेनेज सिस्टम? एटा केमती देखा जाए जेतेबेले रिवर्स माने आउटवर्ड रेडिएट हुंती फ्रॉम अ सेंट्रल हाई पॉइंट लाइक स्पोक्स फ्रॉम अ हब, ताकू कुआ जाए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न. ओके, बाकी ड्रेनेज पैटर्न रे कौन रहिले? ट्रेलिस पैरेलल वैलीज रे देखा जाए. पैरेलल वैलीज. डेंड्रिटिक पैटर्न कौन? इट इज ट्री लाइक. एमती काइंड ऑफ
It is tree like. It is known as dendritic. Okay. Consider the following statements regarding the Western and the Eastern Ghats. Western Ghats emane hochante higher and more continuous than the Eastern Ghats. Eastern Ghats have been highly dissected by rivers flowing eastward into the Bay of Bengal. Anaimudi is the highest peak of the South India, lies in the Western Ghats. Which of the above statements are correct? One, only two, all the three, and none. I'm giving you 15 seconds to answer. Answer above, all the three are correct. Western Ghats ro average height kete? They are higher. Average hochi 900 to 1600 meter achi, and Eastern Ghats they are lower, around 600 meter average height tankara rochi, and Western Ghats hochi they are more continuous. ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେଟା ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ except Palghat gap. Our Eastern Ghats hochi it is discontinuous. Mane they are eroded by the rivers. Direction kono? Eastern Ghats or Western Ghats ro? Eastern Ghats they Western Ghats hochi they run parallel to the west coast, and Eastern Ghats hochi parallel to the east coast. Rivers जो Western Ghats रे include थांदी से माने छोटो थांदी short steep और west flowing, and Eastern Ghats रे river थांदी they are major east flowing rivers cut through Godavari, Krishna, Mahanadi for example. Anaimudi एटा होची highest peak एटा कोडी अछि South India रो Kerala रे. Average आर elevation केते 2695 meters lies in the Western Ghats. So all the three options are correct. Question number 19. Azarson Kaila, the Peninsular Plateau has very few fold mountains compared to the Himalayas. Reason? It is part of the ancient stable shield that has not experienced significant tectonic movement in recent geological times. Both assertion and reason are true. R is the correct explanation of A. Both assertion and reason are true. R is not the correct explanation of A. A is true, R is false. A is false and R is true. ମୁଁ ଆଉ ଥରେ statements show कर दଉଛି. 10 seconds ଅଛି answer କରିବାକୁ. Peninsular Plateau एटा Indian shield रो गोटे part. It is a stable cratonic block. सेटा केबे फॉर्म हेतला? प्री कैम्बियन एरा रे फॉर्म हेतला. So it has undergone no significant folding or uplift. ठीक अछि in recent geological time. Hence it consists mostly of relict mountains. केउ टाइप रो mountains अछि एटी? Relict mountains जेमती Aravallis हेगला, block mountains and residual hills. बहुत कम फोल्ड माउंटेन सेठी देखा जाए. हिमालयस इन कॉन्ट्रास्ट सेगुडी को होची यंग फोल्ड माउंटेन्स. Young fold mountain जोटा कि recent plate convergence द्वारा form हेची around 40 million years ago. So the reason perfectly explains the assertion. Wait a second.
आंसर कौन हम आंसर हम ए दीटा जाक ट्रू अच्छी एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए Question number 20. Which of the following correctly describes the type of coastline along the western coastal plains of India? Emergent coastline, submergent coastline, faulted coastline, depositional coastline. Answer is B. Submergent coastline. जो western coastal plains अच्छी, they are narrow and submergent. Submergent माने कौन जो land टा अच्छी, it has sunk or sea level has risen. Okay. And submergence टा केमिति हेची due to tectonic submergence due to tectonic subsidence. And eustatic sea level rise. The western coast टा कौन submergent. Our evidence कोठु मिलुची drowned river valleys. Drowned river valleys. For example, Konkan and Goa coast. Estuaries, जोड़ा कि नर्मदा, तापी and मांडोवी द्वारा form होची, it also gives evidence. Estuaries. Question number 21. The Chilika Lake, India's larger brackish water lagoon, is located along which coastal division? Konkan coast, Utkal coast, Coromandel coast, Malabar coast. चारटा भितरु कोटा correct option हबो? 10 seconds starts now. Chilika Lake, এটা কোठी situated? It lies to the Utkal coast. Answer हबो Utkal coast. जोड़ा ओडिशा कोस्ट भी कहा जाए, साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा. साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा. एटा इंडिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून. Brackish water lagoon and largest wintering ground for the migratory birds also. आउ एटा कहाउ कहाउ कनेक्ट करूची, एटा बे ऑफ बेंगल को it is connected to the Bay of Bengal by a narrow mouth near सातपड़ा. चिलिका लेक टा Bay of Bengal संगरे कनेक्ट हेची through a narrow mouth near सातपड़ा. And Chilika Lake is also a Ramsar wetland site. ओके तो कौन आमे प्रिलिम्स पॉइंट एटी उठेले चिलिका लेक होची उत्कल कोस्ट रो गोटे पार्ट ओडिसा रे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया एंड रामसर साइट एंड फेमस फॉर कोथि पई की फेमस फॉर इरावाडी डॉल्फिन्स. The Pulicat Lake, which separates the Sriharikota Island from the mainland, lies between the deltas of Mahanadi and Godavari, Godavari and Krishna, Krishna and Kaveri, Tapi and Narmada. कौन हमारा आंसर? Answer will be C. Krishna and Kaveri. Pulicat Lake, it is located along the Coromandel coast. Coromandel coast. Andhra Pradesh ru Tamil Nadu border jage. Tamil Nadu
border जाके जोटा stretch ହେଇଛି lies north of Chennai north of Chennai आउ एटा श्रीहरिकोटा barrier island को separate करूची from the mainland we separate श्रीहरिकोटा island from the mainland आउ एटा कोडी situated ହେଇଛି between Krishna and Kaveri deltas आउ it is also a brackish water lagoon and also a bird sanctuary. Okay. Question number 23. Which of the following regions of the western coastal plains is the broadest and is known for its backwaters or kayals? Konkan coast, Kanara coast, Malabar coast, Kathiawar coast. कौन हमारा correct answer? Answer in 10 seconds. Answer number C. Malabar coast. Western coastal plains. ଆମେ ଏଠି କାହା କଥା କହୁଛେ western coastal plain ର it is divided into Konkan coast western coastal plains Konkan coast Kanara coast Malabar coast ठीक अछि Konkan coast कोठु कोठी स्ट्रेच करे मुंबई टू गोवा Kanara Goa to Mangaluru then Malabar Mangaluru to Kanyakumari right जो Malabar coast रहिला केरला रो सेटा होची broadest and it is marked by the backwaters जहा को kayals भी कहा जाए and lagoon systems भी सेटी अछि for example Vembanad Ashtamudi etc जो backwaters रहिला सेटा केमिति form हुए how the backwaters are formed they are formed due to the submergence and deposition by waves submergence and deposition by waves and coastal currents जोटा कि then splits और lagoons create करे parallel to the coast answer कौन बा Malabar coast according to the question. Question number 24. Which among the following features distinguishes eastern coastal plain from the western coastal plains? Presence of estuaries and narrow width, prevalence of the lateritic soils, presence of extensive deltas and the broader width, higher elevation and steep slope. Answer number C. Presence of the extensive deltas and the broader width. The eastern coastal plain roila, they lies between the eastern coastal plain. They lies between the eastern Ghats and the Bay of Bengal. Au emane kon thani? These are wider up to 120 kilometer thandi and tankro slope be gentle thai. Gentle slope. तो जो मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स रहिले जेमति महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी से माने जतबे फ्लो करंती दे डिपोजिट ह्यूज अमाउंट ऑफ alluvium forming broader deltas for example जेमति गोदावरी डेल्टा हे गला कृष्णा डेल्टा हे गला in contrast जो western coastal plains रहिला they stretch from the western ghats to Arabian Sea आउ ए माने narrow थांती ठीक अछि and तांकर characteristic कोन they are characterized by the submergent coastlines and estuaries due to submergence of land
Answer kon habo? Presence of extensive deltas and broader width. Question number 25. Which of the following rivers does not form a delta along the eastern coast of India? Godavari, Mahanadi, Krishna, Periyar. Very easy question. Answer is Periyar. Kind of Periyar river से westward flow करे into the Arabian Sea. Not into the Bay of Bengal. Only जो east flowing rivers रहीगले गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी से माने eastward flow करंदी and they also form larger deltas. Just previous question रही discuss कले. Question number 26. The Gulf of Mannar, known for its coral reefs and biodiversity, lies between India and Myanmar, India and Maldives, India and Sri Lanka, India and Indonesia. Gulf of Myanmar, जे कि ता biodiversity and coral reefs ପାଇଁ ଜଣା ଯାଏ, it lies between which of the following options? Answer about India and Sri Lanka. Gulf of Mannar से कोठी located है जी? Southeastern coast of Tamil Nadu. Southeastern coast of Tamil Nadu, India, and the western coast of Sri Lanka. Okay. And eta kahara part? It forms a part of the Coromandel coast between Rameswaram Island and Mannar Island. Our region ta, it is a part of the region is a part of Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve, जोटा कि India रा first marine biosphere reserve, जोठी they are known for their coral reefs, sea grasses, other biodiversity, endangered species जेमती dugong हेगला. And ये marine biosphere reserve केबे declare हेतला? Marine Biosphere Reserve 1989 रे declare हेतला and it is rich in corals. Question number 27. The Mumbai High, one of the India's largest offshore oil fields, is located along the which coastal region? Factual question अछि, जल्दी जल्दी answer करंदु live chat रे. 5 seconds दोची मु time. काठियावाड़ coast, Konkan, Kanara, Malabar coast. Answer about B. Konkan coast. Mumbai High, एटा गोटे offshore oil field जोटा कि 160 km west of Mumbai. It is located in the Arabian Sea. It lies off the Konkan coast, part of Western Coastal Plain. Kahara part? Western Coastal Plain ra part. Maharashtra region ra. Aw eta kebe discover itla? 1974 re discover itla. And it remains India's largest petroleum producing offshore field. Awa ko manage kiye kare? Managed by ONGC. ठीक अछि. Answer about Konkan coast. Then question number 28. Consider the following statements regarding the comparison of the eastern and the western coastal plains. Western coastal plains are narrower and characterized by the submergent features like estuaries. Eastern coastal plains are broader and marked by the extensive depositional deltas. The western coastal plains receive rainfall mainly from the northeast monsoon. How many of the above statements are correct? Only one, only two? Then option kona kaichi? All the three and none. 15 seconds ଦଉଛି ମୁଁ answer କରିବାକୁ. Try to answer.
फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से गुड़ी का नैरो थांदी काना ऊपर भी हमें डिस्कस कले एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सबमर्जेंट फीचर्स लाइक द एस्चुरीज. एटा ट्रू. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन they are broad and depositional deltas tankara thai. It is also true. Western coastal plain receive rainfall mainly from the northeast monsoon. Nai, eta false achi. Actually correct answer will be southwest monsoon. Answer kon habo? Only 2. Question number 29, assertion. Eastern coast of India frequently experiences severe cyclones, especially during October to December. Reason, the eastern coast lies open to the Bay of Bengal, where tropical depressions originating in the Andaman Sea move westward towards the Indian coast. Both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of A. Dita jako true, kintu reason is not the correct explanation of A. A is true, R is false. A is false, but R is true. Answer kon haba? You have 15 seconds. फर्स्ट हमें स्टेटमेंट देखबा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स इट एक्सपीरियंस सिवियर साइक्लोन जोटा कि अक्टोबर टू डिसेंबर भितर आसे एटा भी ट्रू अछि आ जो ईस्टर्न कोस्ट रहिला इट लाइज ओपन टू द बे ऑफ बंगाल जोटी ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ओरिजिनेट हुए फ्रॉम द अंडमान सी जोटा कि वेस्टवर्ड देन मूव हुए टुवर्ड्स द इंडियन कोस्ट दीटा जाक करेक्ट अछि हमर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रहिला ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से माने कोठी फॉर्म होंदी वार्म वाटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल क्वेश्चन रो कॉन्टेक्स्ट रे मु कहूची वार्म वाटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल ऊपर से फॉर्म होंदी काहे ना एडी हाई सी सरफेस टेम्परेचर थाए एंड ह्यूमिडिटी थाए ड्यू टू हाई सी सरफेस टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी ओके देन से माने कोन करंदी फॉर्म हैला परे देन दे मूव वेस्टवर्ड और नॉर्थ वेस्टवर्ड जोठी कि से माने जाई कि ओडिसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एई भली स्टेट्स मानकू स्ट्राइक करंदी स्पेशली बिटवीन अक्टोबर एंड डिसेंबर जहाँ को रिट्रीटिंग मॉनसून पीरियड भी कहा जाए सो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द assertion. The 10-degree channel separates which of the following island groups of India? Lakshadweep from Minicoy, Andaman from Nicobar Island, Minicoy from Maldives, then North Andaman from the South Andaman. This is a very easy and factual question. Option number B is correct answer. Andaman Island and Nicobar Island को ये separate करे 10-degree channel. And आरो width कितने 150 किलोमीटर around ये width and it is part of the Andaman Sea. ठीक अच्छे जोटा कि गोटे important international route भी मिनिकॉय एंड मालदीव्स को किए सेपरेट करे 8-degree channel. Question number 31. Which of the following is India's only active volcano? India रो एकमात्र active volcano आ भितर कोउटा Deccan Trap volcano, Narcondam Island, Barren Island, Indira Point. Factual question. Answer about Barren Island. Barren Island एटा कोठी located? It is located in the Andaman Islands, east of the Andaman Islands. एटा होची only active volcano in India, only one in the Indian subcontinent भी. It is part of the volcanic arc. Formed by what? Formed by subduction of Indian plate under Burmese plate.
ठीक है इरप्शन इंटरमिटेंटली ऑकर हुए with the largest recorded activity केबे latest recorded activity केबे थिला तांगर 2017 to 18 रे थिला नारकोंडम आइलैंड टा एटा होची गोटे एक्सटिंक्ट वोल्केनो Question number 32 Indira Point the southernmost point of India is located on Little Andaman Island, Car Nicobar Island, Great Nicobar and the Riches Archipelago. Answer अब C. ग्रेट निकोबार आइलैंड इंदिरा पॉइंट जोटा कि सदर्न टिप भी कहा जाए एटा ग्रेट निकोबार आइलैंड ऊपर लोकेटेड अछि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड रो गोटे पार्ट एटा एंड टू बी स्पेसिफिक जदि हमें तार लोकेशन देखिबा इट लाइज एट 6 डिग्री 45 मिनिट्स नॉर्थ लैटिट्यूड मार्किंग द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन टेरिटोरी आउ एटा 2004 रे जो इंडियन ओशन रे जो सुनामी आसीतला इट वाज सबमर्ज्ड ड्यूरिंग दैट बट रिमेन्स एन इंपोर्टेंट जियोग्राफिकल लैंडमार्क आमे रे सदर्न मोस्ट पॉइंट देखिले जदि हमें नॉर्दर्न मोस्ट कहिया को जिबा देन आर आंसर हबो इंदिरा कोल काराकोरम रेंज रो पार्ट Question number 33. The Lakshadweep Island are primarily composed of basaltic lava, coral atolls and reefs, granite and gneiss, limestone and shale. Lakshadweep Island केमती compose ହେଇଛି? You have 10 seconds. Answer about coral atolls and reefs. Lakshadweep Island सेटा कोठी located? Arabian Sea रे. About 200 to 400 kilometer of Kerala coast and एगुड़िक होची coral island formed by the accumulation of coral polyps. Coral polyps on submerged summits of the volcanic seamounts. Okay. And they also consist of atolls, reefs, आउ जो submerged banks है गले तो एटा गोटे मिसे की making them a part of a typical coral archipelago. आउ ए जो group of islands रहिला केतटा island एठी include थाए 36 islands. किंतु ए 36 island भितरु 10टा island रे ही लोक माने रुहंती they are inhabited. Capital कोन? What is the capital? Kavaratti. And it is the only coral island group of India. Remember this. Which of the following channel separates the Lakshadweep island from the Maldives? 10 degree, 9 degree, 8, 12 degree channel. ऊपर ही मु discuss कली. Answer about 8 degree channel. Question number 35. Which of the following features is most characteristic of the Thar Desert landscape? Deep alluvial valleys, Mary and Bhit sand dunes, lateritic plateaus, lava plains. 10 seconds अच्छे आंसर करिएगो. आंसर हुआ मेरी एंड भित सैंड ड्यून्स. जो थर्ड डेजर्ट रहिला जाको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाए इट लाइज मेनली इन द
western Rajasthan and partly in Gujarat. And it is dominated by what? Dominated by sand dunes, especially ଦି ପ୍ରକାର sand dune, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେରି and second ହେଉଛି ଭିତ. ମେରି dunes ଏଗୁଡିକ semi fixed ଥାଏ, semi fixed dunes and stabilized by vegetation. ଭିତ dunes କଣ? ଆକୁ shifting dunes ବି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ shift ହଉଥାନ୍ତି place to place. Shifting dunes ବି କୁହାଯାଏ, formed by the wind action. ठीक अच्छे आउ जो रीजन रहिला इट हैज arid climate, sparse vegetation, saline soils and ephemeral streams. कैरेक्टरिस्टिक किछटा नोट करो ए रीजन रो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक होची आरा होची arid climate, आउ कोन sparse vegetation, then saline soils and ephemeral streams. ठीक. Question number 36. The Luni River, the only major ephemeral river of the Thar Desert, flows into which of the following? Gulf of Kutch, Run of Kutch, Gulf of Khambat, Indus River. 10 seconds अच्छी आंसर करिबा को. 10 seconds starts now. आंसर हम रन ऑफ कच्छ. लुनी रिवर एटा कोठू ओरिजिनेट होची? पुष्कर वैली नियर अजमेर, आरावली रेंज रो पार्ट. आरावली रेंज, पुष्कर वैली नियर अजमेर, आरावली रेंज. ओके, देन से तापरे केमिति फ्लो होची ओरिजिनेट परे? देन द साउथ वेस्ट व्हाट्स फ्लो होची थ्रू द राजस्थान इनटू गुजरात. एटा एफिमेरल कहीं ना एटा ओनली मॉनसून टाइम रे ही फ्लो हुए, देन से सलाइन हे जाए जेतबळे इट अप्रोचेस इट्स माउथ, आउ से फाइनली डिसअपियर हे जाए इन द मार्शी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ. Question number 37. The Indira Gandhi Canal has transformed part of which desert region into productive agricultural land? First hochi Run of Kutch, Chambal Basin, Thar Desert, then Ladakh Plateau. आंसर हम सी थर डेजर्ट. इंदिरा गांधी कैनाल जो रहिला एटा कोठू ओरिजिनेट हुए? आर होची ओरिजिन फ्रॉम द हरिके बैरेज ऑन द सतलज ब्यास रिवर जोड़ा पंजाब रे अच्छी, देन एक्सटेंड्स डीप इनटू द थर डेजर्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान. एटा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जो बारमर डिस्ट्रिक्ट रहिला तांको ट्रांसफॉर्म करछि बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन. आ क्रॉप्स एटी कोन कोन ग्रो करा जाय? व्हिच क्रॉप्स? व्हीट, मस्टर्ड, कॉटन एंड बाकी जेते फॉडर क्रॉप्स रहिला कैटल मानक पई की. आंसर कोन बा? थर डेजर्ट. ऑप्शन नंबर सी. Question number 38. Consider the following statements regarding the Andaman and Nicobar Islands. They are composed mainly of the basaltic rocks and formed by the volcanic activity. Second statement koichi the Saddle Peak of North Andaman is the highest point in the island group. Then third statement koichi the islands are the continuation of the Arakan Yoma range of Myanmar. आ भितरु केतेटा स्टेटमेंट करेक्ट अछि पचारछि?
Giving you 10 seconds to answer. First statement is incorrect. Se कहला कि they are composed mainly of basaltic rocks formed by the volcanic activity. सेगुड़िक purely basaltic न थांदी, mostly सेमाने कौन थांदी sedimentary and तांकर volcanic origin थाए. ठीक अछि, and some are formed by the marine accumulation. Marine accumulation and uplift. जो सैडल पीक रहिला नॉर्दर्न अंडमान रो एटार होची ये होची हाईएस्ट पॉइंट एटा पूरा ठीक अछि तार एलिवेशन होची 732 मीटर and third statement जो कहिला the islands are the continuation of the Arakan Yoma range of the Myanmar एटा भी पूरा true. They are geologically continuous with the Myanmar's Arakan Yoma hills. Answer कौन हबो? Only 2. 39 question. Assertion. The Thar Desert has several seasonal salt lakes such as Sambhar, Didwana and Pachpadra. Reason, these depressions were once part of the shallow playstone seas that evaporated under the arid condition. चारटा जाक ऑप्शन पढ़ो assertion reason रा and try to answer in 15 seconds. First, assertion कौन कहिछि the Thar Desert has several seasonal salt lake कहला कि Thar Desert रे बहुत गुडे seasonal salt lakes थाए जेमति कि सांभर दिद्वाना and the पचपद्रा एटा बिल्कुल करेक्ट अछि. This is true. And reason कहला कि ए जो depressions एगुडी को गोटे पार्ट थिले shallow playstone seas रो जे कि evaporate हे गले under arid condition. Now both of them are true and reason is the correct explanation of A. जो inland drainage रहिला Thar forms रो inland drainage of the Thar forms playas or salt lakes in low lying basins. They form playas. In low lying basins. Pleistone epoch रे कौन हेतला जो एरियाज अच्छी सेगुडी को इंटरमिटेंट शैलो सीज थिला सेठी आफ्टर द क्लाइमेटिक एरिडिफिकेशन सेगुडी को कौन हैला सेगुडी को एवापोरेट हे गला एवापोरेट हैला परे कौन रही गला सलाइन डिप्रेशंस रही गला saline depression आउ एगुडी को एक्ट करंती as temporary lakes during the monsoons. During the monsoons. For example, Sambhar Lake. Sambhar Lake
आउ गोटे कौन मेन पॉइंट कि एटा होची लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। आंसर कौन हम? आंसर हम A. Both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Question number 40. The Kapas Kranti mission launched by the Ministry of Textiles aims to promote option number A, organic sericulture and silk production. Option number B, high yield long staple cotton cultivation in India. Option number C, bamboo based textile fiber production. Then option number D, export of synthetic and technical textiles. Giving 10 seconds here. Direct question achi. जो मैंने 39 रो A आंसर क्वेश्चन very good. 39 option number A is the correct answer. Both of them are true and reason is also the correct explanation of the assertion. Okay, our answer above B. High yield long staple cotton cultivation in India. कपास क्रांति मिशन एटा कहा द्वारा लॉन्च करा जायछि? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा लॉन्च करा जायछि। गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कहूँ जे कोनोसी मिशन बा इनिशिएटिव बा स्कीम एग्जाम पाई कि प्रिपेयर करूथिबे ऑलवेज रिमेंबर कि को मिनिस्ट्री बा डिपार्टमेंट अंडर रे लॉन्च करा जाउछि। ओके काइना ए इंफॉर्मेशन दा प्रीलिम्स पाई कि बहुत इंपोर्टेंट। आ तार एम कोन कपास क्रांति मिशन रो एम्स एट कि कॉटन रो प्रोडक्टिविटी केमती इंक्रीज हबो इंक्रीजिंग द कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी स्पेशली लॉन्ग स्टेपल कॉटन जोटा कि फाइन टेक्सटाइल्स रे यूज होची एंड से कौन करुची बीटी कॉटन को प्रमोट करुची आउ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को भी प्रमोट करुची। जिनरी एंड स्पिनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करिबा भी गोटे एम फॉर वैल्यू एडिशन। जो नेशनल जो मिशन चली जेमती कि नेशनल कॉटन मिशन ताकू मध्य कपास क्रांति मिशन सपोर्ट करूचे फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इरिगेशन एंड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक अछि एटा एम्स टू प्रमोट एठी नारू ही देखि कि आंसर करि पारथांदे कपास माने कॉटन ऑब्जेक्टिव कोन आरो कि यील्ड को बढ़ेबो क्वालिटी बढ़ेबो कहारो कॉटन रो पार्ट ऑफ द नेशनल टेक्सटाइल मिशन। Question number 41. Which of the following pairs is correctly matched? Initiative देइछि, then launching organization देइछि right hand side रे, We Rise एटा launching organization होछि Ministry of Women and Child Development, Per Drop More Crop Revamp नीति आयोग रो initiative, India AI WHO call Ministry of Electronics and IT METI, INS Megdala, Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSC। आ भितरु कोटा करेक्टली मैच हेछि ए चारटा ऑप्शन भितरु। गिविंग 15 सेकंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया एआई डब्ल्यूएचओ कॉल जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड आईटी द्वारा लॉन्च करा जायछि एटा होछि करेक्ट आंसर हबो। आ एटा कोथि पई कि लॉन्च करा जायछि? लॉन्च्ड टू डेवलप एआई बेस्ड डिजिटल
health solutions in collaboration with WHO. फर्स्ट आउ तीन टा ऑप्शन भी हमें देखिबा वी राइज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा नाइ एटा सेमती किछि गोटे फ्लैगशिप इनिशिएटिव नुह सो एटा तो रॉन्ग हे गला पर ड्रॉप मोर क्रॉप रिवैम्प एटा कहला कि नीति आयोग द्वारा लॉन्च करा जायछि नो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देन इंडिया एआई एबे हमें डिस्कस कले आईएनएस मेगडाला एटा के लॉन्च करछि लॉन्चिंग ऑर्गेनाइजेशन किए इज नॉट अ नोन कमिशन्ड वेसल जीआरएस वेरियस शिप से बिल्ड करे किंतु दिस वन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड आंसर अब सी क्वेश्चन नंबर 42 व्हिच कंट्री गोटे सेकंड Which country recently became the first in the world to achieve triple elimination of mother to child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B? मोर जेतिकी पर्यंत मने पड़ुची एई पर्टिकुलर क्वेश्चन टी आमे जेतबेले आ पूर्व वीक रे एमसीक्यूज डिस्कस करथिले ऑफ फर्स्ट मॉक टेस्ट ए क्वेश्चन टा सेठी भी थिला तो जो माने अटेंड करिथिबे से सेशन से माने एटी इजीली आंसर करि परिबे सो यू हैव ओनली 5 seconds to answer this one and your 5 seconds starts now first Singapore Japan Maldives New Zealand आ भितर को कंट्री एबे ट्रिपल एलिमिनेशन से अचीव करछि आंसर अब सी Maldives WHO ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव को डिफाइन करूची एज एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशंस ऑफ द थ्री इन्फेक्शन तीनटा इन्फेक्शन किए HIV और एड्स सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी ए तीनटा डिजीज इंक्लूड होउचंती ट्रिपल एलिमिनेशन रे जोटा कि WHO डिफाइन करूची अकॉर्डिंग टू WHO मालदीव्स होची फर्स्ट कंट्री जे कि वैलिडेशन अचीव करिची फॉर ट्रिपल एलिमिनेशन आउ मालदीव रो जो अचीवमेंट रहिला एटा सिग्निफिकेंट एथि पई कि काहे ना एटा शो करूची कि गोटे इंटीग्रेटेड मैटरनल हेल्थ सर्विस और एंटीनेटल स्क्रीनिंग इंटीग्रेटेड सर्विस एंड एंटीनेटल स्क्रीनिंग एटा वर्टिकल ट्रांसमिशन एलिमिनेट करि परिबो ऑफ मल्टीपल इन्फेक्शंस आंसर कोन बा आंसर बस सी मालदीव्स Question number 43. Which two Indian beaches recently received blue flag certification for sustainable coastal management? Option number A, Varkala, Kerala and Talsari, Odisha. Option number B, Kolavam, Tamil Nadu and the Devka, Daman. Option number C, Mandvi, Gujarat and Gopalpur, Odisha. Option number D, Baga, Goa and Marina, Chennai. Answer अब A, Varkala, Kerala and the Talsari, Odisha. एटा एबे रिसेंटली ऐड हेची टू इंडियाज ब्लू फ्लैग लिस्ट जोटा कि जो 33 इंटरनेशनल इको क्राइटेरिया रहिला से माने ता सहित अलाइन करिके ऐड हेई परचंदी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 44th question. Consider the following statements regarding India's recent AI and digital governance initiatives. Statement number 1. The ICAI METI framework aims to promote sovereign AI and audit-ready digital systems. Tech Bharat, in partnership with the Google Cloud, launched the first AI Center of Excellence for the public good. The India AI mission has no collaboration with any international organization. How many of the above statements are correct? Only one, only two, all the three, and none.
आंसर कौन हम? स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर करेक्ट. जो आईसीआई मेटी फ्रेमवर्क रहिला से गुडी सोवरेन एआई डेवलपमेंट को एनेबल करूछंती टेक भारत गूगल क्लाउड इन पार्टनरशिप विथ द गूगल क्लाउड से लॉन्च करची एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर पब्लिक गुड. दीटा जाक करेक्ट आंसर. This is wrong. The India AI mission has no collaboration with any international organization. First तो notice करिवे कि statement टा टिके extreme भी है याउची. काहेकि ना एबे इंडिया एआई से पार्टनर करिछि with the WHO. पार्टनर करछि with WHO for ethical AI research. आंसर कौन हबो? आंसर हबो only 2. Question number 45. Assertion कहिछि उत्कल coast of India holds growing significance for India's blue economy strategy. तार reason होछि it includes both Chilika Lake and newly certified blue flag beach at Talsari, supporting biodiversity and sustainable tourism. The assertion reason they are true and R is the correct explanation of A. Both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. C कहला कि A is true but R is false, and D is A is false but R is true. Answer कौन हबो? You have 15 seconds and it starts now. आंसर हम दीटा जाक ट्रू अच्छी एंड रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन अच्छी असर्सन जो उत्कल कोस्ट आमर रहिला सी गोटे इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वैल्यू को कंबाइन करूची. चिलिका लेक जोटा कि लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लगुन आउ जो तलसरी बीच रहिला एबे आमे ही डिस्कस कले कि से गोटे ब्लू इकोनॉमी को एनहांस करूची prospects through ecotourism conservation and the livelihood support. तो दीटा जाक ट्रू अच्छी एंड R is the correct explanation of A. Forty-sixth question. Odisha cabinet recently recommended inclusion of which tribal language in the 8th schedule of the constitution? Santali, Kui, Bonda, Juang. आ भितरु को ट्राइबल लैंग्वेज को एबे ओडिशा कैबिनेट रिसेंटली रेकमेंड करिछि फॉर इट्स इंक्लूजन अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर अब बी कुई. कुई लैंग्वेज को एबे रेकमेंड करा जाइछि. 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कोन रिकॉग्नाइज करे? इट रिकॉग्नाइजेस द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. आ अंडर लिस्टेड थांती ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. एबे कुई को रेकमेंड करा जाइछि. among the listed options santali eta already अछि 8th schedule रे, already there. then bonda eta ebe report kara jai nahi for inclusion, and juang likewise eta ebe recommend kara jai nahi. So the 8th schedule re kon hue it lists the official recognized languages, and official language jetebale gote hei jae taku kon advantage mile? Inclusion gives political and cultural recognition to the language.
ठीक अच्छे ओडिशा रेकमेंड करिछि किछिटा ट्राइबल लैंग्वेज जेमति कि साउरा हे गला कुई मुंडारी and ho for their inclusion in the 8th schedule and kui language kiye kuhanti spoken by whom kui is spoken by the kond tribal community of Odisha. 47 Amo hospital scheme of Odisha primarily focuses on option number A construction of new medical colleges, option number B upgrading infrastructure and services delivery in public hospitals, option number C universal health insurance for tribal areas, option number D establishment of Ayush health parks. 10 seconds दोचे आंसर करबा को Answer is B. Upgrading infrastructure and service delivery in public hospitals. जो आम हॉस्पिटल स्कीम रहा एटा गोटे हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव आम माने होची आवर इन ओडिया ऑफ द ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट जार इंटेंशन होची कि इंफ्रास्ट्रक्चर को केमती अपग्रेड करा जिवो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करा जिवो एंड सर्विस डिलीवरी इन पब्लिक हॉस्पिटल्स भी केमती स्ट्रेंथन हबो इन द स्टेट स्पेशली डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल हॉस्पिटल ये जो स्कीम टा एम्फासाइज करूची केमती इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करा जिवो जेमती कि बेड हैला इंटेंसिव केयर यूनिट्स डायग्नोसिस एगुड़िक केमिति स्ट्रेंथन करा जिवो बा इंप्रूव करा जिवो सर्विस को केमिति स्ट्रेंथन करा जिवो फॉर एग्जांपल इमरजेंसी केयर स्पेशलिस्ट अवेलेबिलिटी आउ पेशेंट्स मानकर एक्सपीरियंस को भी केमिति इंप्रूव करा जिवो इट इज नॉट प्राइमरीली अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू मेडिकल कॉलेज तो ऑप्शन एक इनकरेक्ट हेगला यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल एरियाज एटा भी इनकरेक्ट हेजिबो और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयुष हेल्थ पार्क्स ऑप्शन नंबर डी एटा भी इनकरेक्ट हेजिबो देयरफॉर मोस्ट एक्यूरेट चॉइस होची ऑप्शन नंबर बी Question number 48. The Mahavinayak temple of Jajpur has been identified for inclusion under which of the following initiatives? Jajpur रे जो Mahavinayak temple अच्छी ए following initiatives under रे कहा under रे it has been identified for inclusion. First, Swadesh Darshan 2.0 religious circuit. Option number B Odisha Heritage Promotion Circuit. Option number C Prasad scheme Buddhist tourism. Option number D Bharat Parv cultural mission. Answer about 48 रो ऑप्शन नंबर बी ओडिशा हेरिटेज प्रमोशन सर्किट टेम्पल महाविनायक टेम्पल नारू ही जना पड़ी जाउची तांकर मेन श्राइन किए एंशिएंट शिवा श्राइन वन ऑफ द एंशिएंट शिवा श्राइन्स एटा प्रमोट करा जाए अंडर द ओडिशा हेरिटेज प्रमोशन सर्किट टू एनहांस व्हाट टू एनहांस pilgrimage tourism and heritage conservation.
ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। Under the We Rise Women Empowerment Program, Odisha's, गोटे सेकेंड सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, Odisha's pilot project aim at self-help group financing. Option number B, market access and digital mentoring for women entrepreneurs. Option number C, employment guarantee for rural women. Option number D, free vocational education for tribal women. Answer कौन हबो? 10 seconds starts now. 48 ର ସମସ୍ତେ B आंसर ଦେଇଛନ୍ତି, very good, B is the correct answer. 49 ର କଣ आंसर हबो? ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ ଚାଟ୍ ରେ କରନ୍ତୁ। Option number B is the correct answer. Market access and digital mentoring for women entrepreneurs. We Rise program जोटा रहिला, it comes under which ministry? Ministry of Women and Child Development. आउ एटा फोकस करूची women मानकर economic empowerment केमती हबो? Economic empowerment, then including entrepreneurship, तांकर digital skill, market access, mentoring, finance को access सबु केमती improve हबो, it focuses on that. आउ ओडिसा रो जो पायलट रहिला अंडर वी राइज, एटा एम्फासाइज करूची कि केमिति वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मानकु सपोर्ट प्रोवाइड करा जिवो, गिविंग देम डिजिटल मेंटोरिंग, मार्केट लिंकेजेस एटसेट्रा. It is not purely about SHG financing, तो ऑप्शन ए एठी रॉन्ग हे गला. And employee guarantee for rural women, एठी भी ऑप्शन सी रॉन्ग हे गला. और फ्री वोकेशनल एजुकेशन फॉर ट्राइबल वुमेन, एठी भी रॉन्ग हे गला. ऑल्दो किछटा एस्पेक्ट एजुकेशन बा ट्रेनिंग रो इंक्लूड करा जाई पारे, द कोर जो प्रोग्राम रो रहिला, इट इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड मार्केट एनेबलमेंट. तो आमे एठू प्रिलिम्स पॉइंटर्स कोन उठेले कि जो वी राइज प्रोग्राम हमर रहिछि, एटा होछि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पई और डिजिटल इकोनॉमी पई कि एम्पावरमेंट इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री मन रखिबे, फोकस आरो कोन रहउछि, डिजिटल मेंटोरिंग ऊपर फोकस रहउछि, मार्केट लिंकेजेस ऊपर फोकस रहउछि, आउ स्टार्टअप सपोर्ट केमिति मिलिबो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मानको ता ऊपर भी फोकस रहउछि. Last question, Ajra last question. Consider the following statements regarding Odisha's environmental and economic developments. Okay, October 2025. First statement, Talsari Beach received Blue Flag certification for adherence to global ecotourism and standards. Option number 2, I mean statement 2, sorry. Odisha's coastal renewable project focus primarily on offshore wind energy. Statement number 3, mangrove conservation initiatives have been scaled up to prevent the coastal erosion. आ भितरु केतेटा statement correct अछि? Only 1, 2, 3 and none. Giving you 15 seconds to read and answer the question.
आंसर हम बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट कहला कि तालसारी बीच सी भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसीव करछि फॉर इट्स अधरेंस टू ग्लोबल इको टूरिज्म स्टैंडर्ड्स. दिस इज जस्ट अ सेकेंड. ओके दिस इज करेक्ट. आमे आगुरु भी डिस्कस करछे. एंड स्टेटमेंट नंबर 2 कौन कही? स्टेटमेंट नंबर 2 कहला कि ओडिशार कोस्टल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट ये फोकस करछि प्राइमरीली ऑन द ऑफशोर विंड एनर्जी. एटा इनकरेक्ट अछि काइना जो रिन्यूएबल एक्सपेंशन रहिला सेटा सोलर आउ विंड को इंक्लूड करूछि, नॉट एक्सक्लूसिवली ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट. इट आल्सो इंक्लूड द सोलर ones with the wind. Primarily offshore wind energy ऊपर एटार फोकस नाही. So it is partly incorrect. हमें को incorrect consider करिबा. Then mangrove conservation initiatives have been scaled up to prevent coastal erosion. एटा ठीक अछि. ओडिसा रो फोकस रही मैंग्रोव प्रोटेक्शन ऊपर आ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऊपर एठी जे हमें एठी डिस्कस कले तो दीटा करेक्ट आंसर हबो. आज 50टा क्वेश्चन आम डिस्कस कर सारे. जो मैंने लाइव सेशन अटेंड करना लाइव चैट रे जो मैंने आंसर देना से मैंने रिकॉर्डेड भी देखि पारिबे एंड कमेंट सेक्शन रे आंसर करि पारिबे. जो मैंने टेस्ट देना आई वुड एडवाइस देम कि डू गिव द टेस्ट. एटा नॉलेज अप्लाई पे बहुत इंपोर्टेंट. एग्जाम रे केमिति नॉलेज को आर्टिकुलेट करा जाउची, केमिति नॉलेज को अप्लाई करा जाउची, एटा लैटरल नॉलेज बढ़ेइबो एंड एलिमिनेशन स्ट्रेटजी भी स्ट्रेंथन करिवो. देन गोटे टाइम क्रंच रे केमती पेपर अटेम्प्ट करिवार अछि से हैबिट भी डेवलप हबो, टाइम मैनेजमेंट डेवलप हबो. आ जो माने टेस्ट देई नांती से माने स्टिल डिस्कशन क्लास अटेंड करि परिबे. आ जहां भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एठी मु डिस्कस कली, एक्स्ट्रा इन्फो ताकू निजरो नोट्स रे से माने इंक्लूड करि परिबे फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बिफोर एग्जाम. Okay, so that is it for today. Thank you for watching.